Negotiable instruments में negotiable mean transferable, instruments mean written documents. Negotiable instruments consist of three documents, like we can say bill of exchange, promissory note, and checks. Negotiable Instruments Act 1881, it has been established in 1st March 1882 and contains 139 sections. And if we can, also we can say negotiable instrument as a piece of paper which entitles a person to a sum of money mentioned in it and which is freely transferable from one person to another person. Mean negotiable instrument is a piece of paper through which one person who holds this instrument is entitled to be in cash that amount as it has been mentioned in this instrument, and is capable to be transferred that amount to someone other person. So this is called the negotiable instruments. And next, there are the characteristics. There are the characteristics of these. Number one, fully transferable. Negotiable instruments they can be fully transferable. The person who is the owner of a negotiable instrument can be in cash in that amount and can be transferable from one person to the other person. Secondly, rights of holder. The person who holds the negotiable instrument, he have a right to recover the money as it has been mentioned in that instrument, and it can be transferred that amount from one person to the other person. And in case if this instrument is dishonored, then he is entitled to file a case against that person. Better title. Better title means that the person who has been issued the negotiable instrument, if there is some defective in title, so he can make the better title of that instrument. For example, if there is a check and the check has been issued by some person to some other person, if there is some fault or defect regarding the date, some other like if you have to be signed or you have to be overwriting or sign, then the banker can ask you the initial on that place. So this is how they can be make the better title. Promise order. Promise order mean the negotiable instruments. As I told you, there are three categories: bill of exchange, promissory note, and checks. The promissory note and bill of exchange is in cash in the form of a promise, whereas check is in cash in the form of order. Next, the certain amount. In negotiable instruments, they have to be mentioned the certain amount in those instruments. Without that, they are unable to be on cash that amount and unable to be transferred that amount to some other account. So it is necessary the amount should be certain there in negotiable instruments. Presumptions. Every instrument drawn, accepted, or endorsed transfer is a presumptions in these instruments. Could draw cases, accepted cases, endorsed cases, and transfer cases. In writing, all the negotiable instruments should be in writing, and no oral instrument can be considered to an instrument. And if oral, someone say the oral instrument, that is no instrument. आगे देखें promissory note. Promissory note में जो necessary है, that promissory note should be in writing form and has been signed, and to make the payment on demand and fixation determine the time. Sum of amount is 65% be there. So these are the ingredients, these are the important element of the promissory note. So it is not in a verbal form, it is in a written form, signed, stamps, and fixes and determine time, and the sum of amount person to form the that the promissory note have to be given that specific person should be mentioned there. तो वो उसको mention होना चाहिए. Secondly, this specimen of the promissory note will be mentioned here. जिसमें ऊपर amount दी हुई है, date दी हुई है, फिर इसमें लिखा हुआ है किसको किसके हक में लिखा हुआ है. There is a person who has been
initiate this promissory note, उसका नाम लिखा हुआ नीचे, and that is signed and stamped is there. आगे इसके essential of promissory note. Essential जो है promissory note की in writing. तो क्या कहते हैं कि promissory note not in a verbal form, so it should be in a writing form. It is necessary. It is a requirement of this one. आगे देखें promise to pay. In a promissory note, it is very clear. There is a promise to pay the amount, and it should be very clear and be mentioned in the note कि किसने किसको कितने पैसे देने हैं. Unconditional promise. Unconditional promise means the promise which has been made is not subject to any condition. Without any condition, they have to make the promise and they have to make the payment, which can be transferred from one person to the other person, signed by maker. The promissory note who has to be made to someone in the favor of other person, so that has been signed by the person on that promissory note. Without sign, that is not a complete promissory note. Certain mark. Certain mark you mean the instrument sometimes has been made by more than one maker, so they may be liable to jointly or individually, but alternative promisor are not allowed. तो इसमें एक jointly और या individually they have to be mark, उसको sign करना पड़ता है और उसके बगैर वो issue नहीं हो सकता. Certain payment के mention the name of the person, कि certain pay किसी specific person को जिसको देना उसको उसका नाम mention किया जाए. Certain sum mean specific amount जो है वो बताया जाए कि कितनी amount है, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, whatsoever. Certain amount जो है वो पता होना चाहिए. Pakistani currency, as Pakistani currency mean के जैसे अपने promissory note that should be in the form of Pakistani rupees, and no foreign currency will be taken in the promissory note, and that is not valid in Pakistan. Other formalities में जो है place, date, law, full consideration stamp, and a fixing stamp. These are the other formalities which is necessary in the promissory note. Promissory note में ये promissory note जो है that is in writing form, not in verbal form. ये तो मैंने आपको बता दिया. अच्छा, ये formalities थी, आगे formalities बताएंगे. Important points इसके बता दें. Important points में only to particular person, payable to bearer, payable to order, payable to bearer, currency note is not a per note. अब इसमें क्या कहते हैं कि promissory note जो है particular person को issued किया जाता है, and the person who is a holder and bearer payable to order or order, तो जिसके पास होगा उसको ये issued होगा, उसको वो can be in cash, it becomes payable to bearer, मतलब जो bearer जिसके पास है उसको देंगे. और वो कहते हैं कि बैंक नोट एंड करेंसी नोट इज नॉट कॉल्ड एज अ promissory note. वो promissory note की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता. आगे देखें बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको इसमें एक बता देता हूँ एग्जांपल जो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से है, वो ये कि ये कुछ चले हो गया. बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से आपको एग्जांपल देते हैं. जैसे व्हेन आई वाज अब्रॉड, तो व्हाट हैपेंड, आई सेंड सम मनी टू माय किड्स. तो उसमें होता है कि वी हैव टू गो टू द सम मनी एक्सचेंजर जो वहां पर होते थे लाइक वेस्टर्न यूनियन. सो वी हैव टू बी पे अमाउंट लाइक 500 पाउंड or 1000 पाउंड जो भी हमने भेजना होता था. So we have to be deposit that amount over there. They give us a receipt, and in that receipt it has been mentioned to that specific person to whom we have to send the amount. And secondly, they have to be mentioned the bank in which from which bank we can be receive that amount in Pakistan. To whom that person we have to send amount, that person will be able to receive that amount from that bank. तो क्या था कि जैसे 500 पाउंड भेजे, वहां पर डिपॉजिट करवाया, उसने रसीद दे दी और उसने कहा कि पाकिस्तान में एपीएल बैंक से जाके फलाने ब्रांच से आप ले लें. तो जो पर्सन जाता था वो जाके पैसे जिसके नाम से होता था वो जाके उसको इनकैश करवा लेता था. अब इसमें क्या है, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ 3 पर्सन. फर्स्ट,
जब मैंने वहां डिपॉजिट करवाया, दैट पर्सन जिसके पास मैंने डिपॉजिट करवाया वो पर्सन जिसके पास मैंने डिपॉजिट करवाया वो कौन कहलाएगा? वो ड्रॉर कहलाएगा। और ड्रॉर क्या करेगा? वो आगे जिस बैंक को कहेगा पाकिस्तान के वो उसको पे कर दें, जो लेने आएगा उसको क्या कहेंगे? ड्रॉई कहेंगे। और जो पर्सन वो जो अमाउंट रिसीव करने आएगा उसको क्या कहेंगे? पे कहेंगे। So bill of exchange is based on the connection of three person, one person draw, second die, and third is pay. तो मैं भेजता था वहां से, मैं जिसको पास पैसे रखवा दिए जाते थे भेजने के लिए उसको क्या कहेंगे? ड्रॉर। और जो ड्रॉर जो था आगे बताता था कि फलाने बैंक से जाके ले लें एबीएल से, वो ड्रॉई। और जो बंदा लेने जाता था उस पैसे को उसको क्या कहेंगे? पे। वो पे है। तो नीचे ये इसका स्पेसिफिक दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये इसको आप देख लें, जो सिंपल है इसमें नेम, डेट, अमाउंट और ये साइन स्टैंप वगैरह ये नेसेसरी है और इसमें स्टैंप भी लगता है। ठीक है, आगे देखिए जो इसके एसेंशियल है, एसेंशियल बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग, कि इन राइटिंग फाइल में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, इसके ऊपर बगैर ये इज ए नॉट कंप्लीट। अनकंडीशनल ऑर्डर मीन के ये विदाउट एनी सब्जेक्टिव कंडीशन, किसी कंडीशन के साथ इसको नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल ऑर्डर। साइन बाय ड्रॉर, साइन एंड स्टैम्प, इसमें क्या होगा? साइन और जो ड्रॉर जो है उसके साइन एंड स्टैम्प होने जरूरी है। सर्टन ड्रॉय, तो ड्रॉय जो अमाउंट भेजेगा दैट शुड बी मेंशन, सर्टन अमाउंट है और सर्टन पर्सन के नाम है, उसका नाम जो है वो मेंशन होना चाहिए। ड्रॉय नेम जो है मेंशन होना चाहिए उसमें। सर्टन पे, सर्टन पे कि जिसको वो रकम वसूल करनी है उसका स्पेसिफिक नाम दिया जाए कि अब्दुल्ला ने ये रकम वसूल करनी है, उसको स्पेसिफिक पता होना चाहिए, नाम उसमें मेंशन हो। सर्टेन सम, वो अमाउंट सर्टेन सम पता हो कि 500 पाउंड है, 10,000 पाउंड है, कितना हजार पाउंड है, तो दैट इज सर्टेन सम, वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। पाकिस्तानी करेंसी, तो अमाउंट जो वहां से भेजेंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू पाकिस्तानी करेंसी, और वो जब आप उसको रिसीव करेंगे दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी करेंसी में होना चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज जो है उसमें आ जाता है डेट, प्लेस, अटेस्टेशन, कंस्टेशन, दीज आर द अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज वैलिड, पेएबल टू बेरर और डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल टू ऑर्डर। पेएबल ऑर्डर लाइक चेक, यानी जिसके पास जो होल्ड ऑन करेगा, जिसका नाम होगा, जिसके नाम से वो बुक करवाया जाएगा, प्रोमोजी नोट होगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जो वो उस बंदे को वो डिलीवर किया जाएगा। इज अ वैलिड पर्सन टू रिसीव दैट अमाउंट अगेंस्ट दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे इसके जो डिफरेंसेस हैं, प्रोमोजी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, यू हैव टू बी गोन थ्रू योरसेल्फ। इसके बाद आगे आ जाए चेक पर। Check, as you know, the person who hold the check is called as a bearer, and bearer have a right to be cash that check. And if that check is in the form of cash, either with the name of that person, that check can be in cash. Otherwise, if there is a line, lines of the checks and mark at the corner, then it's called a cross check. तो वो क्रॉस चेक लाएगा। जैसा कि आप जानते हैं चेक या तो कैश होगा या क्रॉस चेक होगा, there are two categories। उसके बाद नीचे इसके एसेंशियल आ जाते हैं इन राइटिंग, obviously check is in writing form, not a verbal form। Unconditional, check is unconditional, is not subject to any conditions, but in the form of if you want to purchase some property, then there is a condition you have to mark, especially in a stamp paper regarding condition. Signed by drawer, and this check has been signed by the drawer who issued the check. He has to be signed that check, payable on demand. And when some person who hold that check present before the banker, that check should be in cash and payable on demand. Certain sum, this check is there is a certain sum, and certain sum mean that there is specifically be explained or given the detail have been mentioned how much amount you want in cash through that check. Like 10,000, 5,000, वो in figure and digits में लिखा होता है।
पेएबल टू बेयरर ऑर्डर, और जो बेयरर हो, जो होल्डर हो, तो उसको ये जो चेक जो है वो उसको पे करना है। आगे इसका स्पेसिमेन ऑफ चेक, जैसे कि आप जानते हैं बहुत से बच्चे बैंक में भी जॉब करते होंगे, अकाउंट होल्डर भी होंगे और उनके पेरेंट्स भी हैं, दे हैव टू नो द चेक जो है उसकी फॉर्म क्या होती है, डेट, चेक नंबर और बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये चीजें मेंशन होती है। देन यू हैव टू साइन ऑन चेक, then that check is be capable to be in cash. नीचे आगे differences between check and bill of exchange, ये differences आपने खुद से पढ़नी है। आगे देखिए टाइप ऑफ चेक्स। टाइप ऑफ चेक्स में आ गया ओपन चेक एंड क्रॉस चेक। ओपन चेक वो होता है दैट चेक which can be present before a banker and can be in cash that check, that is called open check। ठीक है, तो इससे आगे चेक क्या कहलाएगा? ओपन चेक कहलाएगा। उसके बाद क्रॉस चेक। क्रॉस चेक्स यू नो दैट चेक if the one check has been mentioned with the two lines or at the corner of check, that is called the cross check। But the crossing of checks के हवाले से there is a number of categories of the cross check। Number one, journal crossing। जर्नल क्रॉसिंग में अगर आपने एक चेक के कॉर्नर पे दो लाइनें लगा दी हैं जिसके स्पेस में कुछ नहीं लिखा हुआ या कंपनी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द जर्नल क्रॉसिंग। और उसके बाद स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में इसके नीचे जैसे कि लिखा हुआ है हबीब बैंक लिमिटेड, जिसमें बैंक का नाम मेंशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल क्रॉसिंग। आगे अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग, ऐसा अकाउंट लाइन है जिसके दरमियान अकाउंट पेइंग लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड द अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग। और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ऐसा चेक जिसमें के नॉट नेगोशिएबल लिखा जाए और जिसमें के give protection to the holder or drawer of a check, because if such a check goes into the wrong hands, the true owner will not lose his claim। तो किसी गलत हाथों में चला जाए तो वो अपना क्लेम को वो लूज नहीं कर सकते, then it can be challenged and can get that amount। तो इस तरह ये फोर कैटेगरीज, वन जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग एंड नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, दीज आर द फोर कैटेगरी। आगे कहते हैं कि हु में क्रॉसिंग चेक। तो चेक की जनरल से आगे ये आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है हु में क्रॉसिंग, द पर्सन हु इज अ holder of a check has an entitled to be cross check। The person who has a check with their name and have account of that check is entitled to be make the cross check of that one। ठीक है, इसमें होल्डर में क्रॉस जनरली और स्पेशली क्रॉस जनरली। ठीक है, ये होल्डर जो है वो चेक को क्रॉस कर सकता है एंड इट इज डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन कि उसको जनरल क्रॉस करे या स्पेशल क्रॉस करे या इसको नॉन नेगोशिएबल क्रॉस करे। आगे दैट इज कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज आर can be done by the person who is the account holder who will issue the check in the form of cross check, so can be used any category of that। Agar nature of negotiable instruments, nature of negotiable instruments, inland instruments, residents of Pakistan and payable or drawn in पाकिस्तान। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में जब पाकिस्तान में आप नियोग करेंगे तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंस हो और पेएबल और ड्रॉन जो है वो पाकिस्तानी हो। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ड्रॉन आउट ऑफ द पाकिस्तान, पेएबल आउटसाइड ऑफ द इनसाइड ऑफ पाकिस्तान। जो बाहर से हो वो पाकिस्तान में करे या पाकिस्तान से बाहर करे, दैट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। बेरियन इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन हु होल्ड is entitled to be in cash, that amount is entitled to payable, तो उसको दिए जा सकते हैं। Order instruments, order instrument is like that when a person present a check before a banker and for encashment, that is called order to pay। तो वो that is called in order to pay। जैसे आपको पीछे बताया था कि चेक में जो प्रॉमिस किया गया that is called order, और प्रमोशन नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऑर्डर किया जाएगा या कैश करवाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। आगे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि उनके साइंस से मैच ना कर रहे हो या डेट्स का कोई मसला आ रहा हो, इस तरह की चीजें होंगी तो दैट इज बी
create the ambiguous instruments. Figure and words. The checks which has in the documents of the instruments like negotiable instruments, there's a figure and words has been mentioned. If there's a difference, then you know that it's not entertainable. So they have to be issued the new one. So it is clearly they have to be checked out. The figures and words should be correct. जैसे कि आपने 50,000 लिखा था, that should be right in if words 50,000 and in figures mean in words 50,000 5000. Inchoate instruments. अब इसमें such instrument जो कि which is not signed, not stepped, and untempered instrument and unsigned, unstamped instrument. And these are called the inchoate instruments. Time instruments is such instrument time payment invention, जिसमें के जो payment करनी है उसका time specifically has been mentioned over there. Fictitious bill. Fictitious bill drawn a pay fictitious. Mean इसमें कि जैसा कि मिसाल दीजिए signatures की, if he proves the signature of the drawer and the first endorser pay are in the same handwriting. मतलब कैसा है कि जिसमें कि handwriting जो है वो signatures जो है match ना करे, मतलब such color is called the fictitious bills. Accommodations bills. A bill which is drawn or accepted without consideration. Which bill is accepted or drawn without consideration, where there is no consideration, that is called the accommodation bill. Undated bill. That bill in which the date is not mentioned is called undated bill. Bank draft. Bank draft, you know, then you have to be like, you have to be make a huge amount to like to purchase some property or some other purpose in which you have to pay a heavy amount to someone other. For that person, you have to use to make the bank draft for that person, or that person also demand the form of bank draft, because if you have taken some amount from the other person in cash, you know, somebody can be send that amount from you. That's why some purpose people said they need they have to take in a bank draft that amount. Bank draft, in fact, is just like a check. I mean, the bankers give that a bank draft, in fact, in the form of like bank check. And bank receive the amount the person who need to make a bank draft to whom they have to give the bank draft. So bank draft जब बन जाता है तो एक किस्म का ये बैंक का चेक होता है, और बैंकर जो है जो अपने कस्टमर से वो पैसे ले लेता है, खुद वो एक जो बना के देता है बैंक ड्राफ्ट या जो आपको कागज देता है, दैट इज कॉल्ड द बैंक ड्राफ्ट. वो एक किस्म का बैंक का चेक होता है, वो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसी वक्त वो अमाउंट जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. दैट इज वर्किंग एज इन फॉर्म ऑफ कैश चेक. ठीक है, तो वो एक किस्म का कैश चेक ही होता है इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट. आगे बिलिंग सेट्स. ये बिलिंग सेट बिल ऑफ एक्सचेंज drawn in parts is called बिलिंग सेट्स. बिलिंग सेट्स में ईच पार्ट मस्ट बी अ नंबर, के नंबर होते हैं, डिफरेंट रेफरेंसेस ऑफ पार्ट्स होते हैं, डिलीवर्ड एंड साइंड बाय द ड्रॉअर एंड इस टाइम टू टाइम दे हैव टू बी इन कैश किया जा सकता है. आगे देखिए डॉक्यूमेंट्री बिल. डॉक्यूमेंट्री बिल, these are be used in a goods. They are related to the bill of lading, railways bills, documentary bills. So I guess that you have to provide the bills. Clean bill, where no documents of title relating to the goods and other documents are attached to the bill is called a clean bill. Where there is no document title relating to the goods, जो सच बिल जो है वो क्या कहलाएंगे, प्लेन बिल कहलाएंगे. ट्रेड बिल. A bill may either be a trade bill or accommodation bill. When a bill is drawn, accepted, or endorsed for consideration, it's called a trade bill. When the bill is related to the consideration, such bill is called a trade bill. आगे escrow.
escrow is a conditionally. A bill delivered conditionally is called escrow. A bill may be endorsed or delivered to a person subject to the conditions that it will be able if certain conditions are fulfilled. Mean subject to some condition, and if those conditions are fulfilled, then the bill will be clear. वो कंडीशन जब पूरी हो जाएंगे तब वो बिल क्लियर हो जाएगा. इस किस्म की बिल होंगे दैट इज कॉल्ड द एस्क्रो. आगे ये मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये यू हैव टू बी गॉन थ्रू योरसेल्फ. अब जो आपको चीजें पढ़ने के लिए दी जा रही हैं, जो आपको खुद से पढ़नी है. नंबर 1, differences between promissory note and bill of exchange. Secondly, the difference between check and bill of exchange. और thirdly, आपने जो पढ़ना है maturity of negotiable instruments. ठीक है, ये चीजें आपने खुद से पढ़नी है. और जो बताने वाली चीज थी वो आपको मैंने बताया कि negotiable instrument जो है consist of like 3 documents, promotion note, bill of exchange and checks. और इसका आगे जो डिटेल्स बताई गई हैं, जो कॉमन थिंग है दैट शुड बी इन राइटिंग फॉर्म, साइन स्टैम्प होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्संस का होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन होनी चाहिए. ठीक है ना, और वर्बल नहीं होना चाहिए. और इसमें ये तमाम चीजें जरूरी हैं. फिर उनके स्पेसिमेंस दिए हुए हैं, उसके स्पेसिमेंस के मुताबिक उनको बनाना चाहिए. फिर मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से जो एग्जांपल दिया कि उसमें कैटेगरी 3 ड्रॉ एंड पे, उस चीज को भी फोकस करें. और ये इसके अलावा चेक्स के हवाले से, चेक में चेक वो होता है जो कैश होता है, दूसरा चेक जो क्रॉस है. क्रॉस चेक की आगे 4 कैटेगरीज हैं. ठीक है, वो बताई गई हैं. और फिर उसके बाद आपको चेक के हवाले से मुख्तलिफ जो टाइप्स ऑफ चेक्स जो हैं ये बता दिया. उसके बाद आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके हवाले से बताया था कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, ये नेचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये सारे आ गया. आगे आपने मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये यू हैव टू बी गॉन थ्रू.